This is the fistula debrider device, and as you can see in the front side of this cannula, there is a spiral shape given to this fistula debrider device to debride the fistulous tract, and there is a small holes to irrigate the whole fistulous tract during the debridation. And here is a two cannula is there, one for inlet of the normal saline to wash the thoroughly debride fistulous tract, and other is for the uh, suction cannula. This is the patency of this cannula is there, and that's why there is a suction from the all the plaques and all the debride elements of the fistulous tract from this side. And here is we can set the battery operated drill machine to rotate this fistula debrider device clockwise and anti-clockwise. Next slide, right. This is a battery operated drill machine which is easily available in the market. Now we are going directly for operated by fistula debrider device. अगर जो राष्ट्रीय है उसमें इतनी ज्यादा आत्मबुद्धता है, they are self-obsessed very much. है ना? तू भी कल तरीका कर एचओडी एचओडी ऊपर अपन उस दिन जेलो का करी तब तूने फोटो ली कल परसों वाला नहीं तो उस चक्कर ये जो आदमी को बिना बनाना इसमें बोलते हैं चाय पेक्षा कितनी गर्मी। महाराष्ट्र में चाय बताया उसका। अरे वो दिन तक आयुर्वेद पर वाले तब चाय पेक्षा कितनी गर्मी। तो एक मेयर के साथ मेयर का शुरू नहीं था, लेकिन वो किशोरी टोटे वालों को ऐसा pushing from the outside external openings with the help of right index finger. We palpate the tip of the guide wire. Now we push out the guide wire from external to internal opening up to the hook is designed in the round hook is designed in the guide wire. Now our divider, fistula divider is ready to operate. You can see here is one end for the irrigation and second is for suction. You can see clearly the sprinkling of the normal saline. Here is pump is on, suction is on. Clearly see. Now we will see the actual procedure on the patient live. We load the battery operated drill machine. We always recommend to avoid the shock, safety precautions to the surgeons and as well as the patients. Lower end of the guide wire is inserted into the fistula debrider device, and we are using the battery operated drill machine continuously irrigation with suction is going on whenever is necessary
clockwise and anti-clockwise. We can move the rotator. All the debris and plaques gets up from the suction, as well as we will guide this fistula debrider with the right hand index finger by inserting into the renal canal in this way. Guide wire always guide us and making the false passage in the renal canal. Only the fistula tract is debride by this wheel pump. You can see it on the screen clearly. Under vision also we can perform this surgery by the side view endoscope using upper end of the guide wire is on the right hand. Record condition and necessary suction and irrigation we will continue. Now we are confirming all the debridement done completely. Now inspection for hemostasis, proper hemostasis should be achieved. There is no bleeding, you can see. After confirmation of every step, we should go ahead. All procedures should be completed under vision. No debris or block left behind. Suction irrigation with clockwise and anti-clockwise movement of this fistula debrider device. Very nicely performing the surgical procedure with this device. We are using since last 6 months this device. Fully under control, under vision. We are performing this surgery. Now our debridement is complete. Lower end and upper end of the guide wire you can see it clearly. Then slightly push back the guide wire, and the round hook of this guide wire we use to hold the shaft sutra into the round hook of the guide wire, and both the guide wire and the shaft sutra we will pull from the anal region. Once the shaft sutra completely round up in the fistula tract through the anal canal, we will pull completely the guide wires and then knotted the shaft sutra both sides of the fistula tract and the anal canal. You can see it clearly on the screen. In this way, this fistula debrider device debrides the fistula tract and help the Kshatrasutra procedure to cut the fistula tract completely. No bleeding at all. You can see it on the screen. Surgery performed very nicely and smoothly. No bleeding
Thank you. This is a Fistula Debrider device. This is a specially designed guide wire, and this is a company-made battery-operated drill machine. Low-level fistula. You can see on the screen. MRI done. These are the all instruments which is necessary for our surgery to debride the fistula. Patient is ready with spinal line. हाँ मेशन सर, can you hear me? यस सर ऑडिबल सर। थोड़ा Yes. स्पीच लाउड कीजिएगा, कुछ लोगों को सुनाई नहीं आ रहा। Okay. Now we will start our PPT. Fistula debrider device. Present invention relates to a fistula in ano to remove the slough and dead tissues or extraneous material from anorectal fistulous tract wound without widening the fistulous tract. In traditional method, we will widen the fistulous tract for debridement. But in this procedure, by this fistula debrider device, there is no need of widen the fistulous tract. Without widening, our device will debride all the fistulous tract completely and fresh it. It causes for early healing and early granulation, and it is also time consuming for cutting the cutting procedure of the Ksha Sutra. This versatile instrument is developed for removing the debris plugs from fistular tract, only designed for fistula in ano. Along with this fistula debrider, we are providing a stainless steel guide wire which is dually working to guide the fistula debrider device and to owing the Ksha Sutra from this fistula from this guide wire. Now, what is the features of this debrider device? This fistula debrider is made up of the stainless steel material, very easy to operate and simple to sterilize because it is made up from the stainless steel. It has two openings, one for irrigation and one for suction. Simultaneously, fistula debrider can irrigate, debrides and sucks the debris and with clockwise and anti-clockwise both rotation. To rotate the fistula debrider device, we recommend battery operated drill machine which is easily available in the market. This recommendation for safety purpose for both patients and surgeons also. For electric shock, to avoid the electric shock. Electric drill machine may be harmful due to the normal saline using for irrigation, chance of electric shock. This is the patent certificate conferred by the IPR Department of Government of India in 2023. The Misham sir. Hello. हॅलो हाँ मॅडम आवाज येतोय ना? हॅलो Hello. Madam, can you hear me? sir Your voice your is clear, but sir your PPT is not visible properly sir. Okay. it is not visible. Okay, I will try. Now, is it visible, madam? No sir. No, no, sir. Now, are you watching my PPT?
Sir, your laptop page is coming, but PPT details is not coming properly. Okay. Content only over the shoulder. Now, is it visible, madam? Completely? Yeah, now it is visible. Okay. Now, the methodology for this procedure to use the fistula debrider. Fistula is an abnormal connection or pathways between the two organs. Here we are discussing only anorectal fistulas. The path which these fistulas takes and their complexity can vary according to the conditions, and surgery is often required to ensure the adequate drainage of the fistula so that the pus may escape without forming an abscess. Fistula in ano is notorious for its recurrence. To solve the above issues, the present invention provides a device that is used in general surgery to remove the debris and plaques from the fistulous tract. This device debrides the unhealthy granulation tissues and fibrous tissues, which becoming the obstruction for healing the fistulous tract. This device is blunt, rigid device. This device is to be counted in surgical instruments. It contains a hollow tube for guiding the debrider, and above this hollow tube, a medium-sized spiral spring is attached to the debrider device. The length of this device is near about 15 centimeter. Diameter is 4 to 5 mm. The base of this device is broad and attached to the electrical drill machine, battery-operated drill machine. The small size of 0.5 mm of the electric drill machine is being used for this procedure. Now, this fistula debrider device is the present innovation to provide the medical products for treating the fistulas, including those having the primary opening in the lower alimentary canal. More specifically, the invention relates to the fistula debrider device. This fistula debrider device is very easy to operate as well as cost effective. Moreover, this procedure is completely performed with the guide wire, and it avoids the making the false passage. This debridement will definitely help to early recovery to avoid the recurrence of the fistula. Now, the advantages: fully debride the entire fistular tract in 360-degree, well irrigation and suction mechanism inbuilt simultaneously, save the operative and anesthesia time also, absolutely no chance of the fall passage due to the use of the specially designed stainless steel guide wire. Clinically, study proves there is no recurrence by operating this fistula divider device. Fistula debrider device is a simple, powerful, versatile instrument that delivers a simple disposable option that is the both cost effective and portable for simple curating procedures in fistula in ano. This plug and perform fistula debrider offers the same advantage as the full debrider system. Now, result we will see. Now, the more discussion about our fistula debrider device. This device saves the time of surgery and anesthesia while reducing the cost, enhance flexibility and safety, causes less bleeding as compared to the traditional surgery, manages incidental bleeding, and provides a simplified move of debriding procedures to OPD patients also. Upon experimentation, it is noted that the completed debridement can be performed in 360-degree, while in traditional method, chances of remaining of the dead tissue in the fistulous tract as it is. Here is no chance of remaining the plaques and the debris in the fistular tract because we are simultaneously debriding in 360-degree as well as suction and irrigation is continuous there. In traditional method, there is no way of suction and irrigation. The summary of the invention does not necessarily disclose all the features essential for defining the invention. The invention may resides in a sub-combination of the disclosed features. The various combination to elaborate on its working and implementation. The fistula debrider is a cylindrical instrument that has a hollow tube with an inner and outer portions
at the distal end of the tube have a spiral swing that smoothly cuts dead tissues as the spring move back and forth. The catheter has continuously suction applied to the device so that cut tissue is captured and removed from the surgical area from the fistulous tract. Faster the speed and smaller the pieces, we can simultaneously manage the speed of the drill machine, rotation of the our fistula debrider device simultaneously, so we can manage at our level on the operative side. While the slower the speed are set, the larger the pieces. So quality of the cuts is good enough to be used for histopathically if cancer or other diseases specific analysis needs to perform. According to we can take the pieces for histopathology. While the use of the fistula debrider will not reduce the risk of the bleeding, continuously suction allows the surgeon's vision of the surgical site to remain clear for much longer periods of the time. This can reduce the overall surgical time required to perform your surgery by reducing the number of the times the surgeon needs to swap the instruments. In an example, the fistula debrider may have an ability to cauterize in the same instruments, which further allows for less blood loss and less changing of the instruments. By this fistula debrider device, we can also cauterize the internal side of the fistula tract. Finally, conclusion, the present invention provides a device to debride the fistula tract, and the device includes the hollow tube enclosed inside the spring and a guide wire having the first end passing through the hollow tube. The guide wire is adapted to pass through the fistula tract along with the hollow tube having the spring loaded thereon. The spring present on the external surface of the hollow tube is adapted to break sloughs and the dead tissues present in the fistula tract while passing through the fistula tract. The final conclusion is the highly significant in avoidance of the recurrence of the fistula in ano. Now, another part of this our webinar is the Bhagandar Tel. What we are procedure now following, most of our surgeons raise the query, madam, can you watching my screen which I share? PPT is not. PPT not visible. Now it's not coming, sir. Are you watching my PPT, sir? Yeah. Okay. Now the another part of our webinar is 2 to 3 surgeons are raised the point or query that if we are traditionally performing the Kshasutra, then what is the purpose of this your instruments? Why we should use your instruments? Another next step is that after the debridement, completely debridement, it will reduce the healing time of the fistulous tract and early granulation. And further is the complaints and the pain of the patient by using the Kshasutra will not be reduced. Okay, then we will take a part about that. We use the Bhagandar Tel, which is advocated by Acharya Sushruta in Chikitsa Stan of the Bhagandar. You can see this shlok in Sushruta Chikitsa Stan 8th chapter. Pipali, Muleti, Lodra, Kut, Ilaichi. We can use all these drugs and make the Bhagandar Tel, which is very useful. Another substitute is also there by Acharya Sushruta, and we will, after the debridement of the complete fistula tract, we will completely close by the vicryl the internal opening of the fistula, and after that we use the pack of the Bhagandar Tel. We pack in the fistula tract and daily dressing will perform. According to the size and the length of the fistulous tract, it will take time to heal the fistulous tract.
but probably 15 to 25 days it will take to complete healing of the fistulous tract by the Bhagandar-Nashan tail. And till date, from 2.5 years, we are using the Bhagandar-Nashan tail without using the Kshasutra in the fistula in NO. We got very tremendous results, and there is no recurrence at all from the 2.5 years. Probably we use 30 to 31 patients in fistula tract for Bhagandar-Nashan tail, and there is till date there is no recurrence. No any patients come to us for recurrence of the fistula tract in 2.5 years, while we are using the fistula Bhagandar-Nashan tail instead of the Kshar Sutra. Okay, here I am conclude my webinar, and if there is a query from the studious and curious participants, you can ask me. Sir, how much cost it would be for the purchase of instrument? Yes, ma'am. This instrument we are make it commercial. The company name is Indo Surgical Private Limited, Jalgaon. They are costing 20,000 rupees of the basic cost, and including the 12% of GST. That is the final cost of this instrument is 22,400. Can you share details? Yes, I can share the details. Which kind of details you want, ma'am? Purchase details means address and all. Okay. Can you watch my screen here? It's not visible properly. Okay. Now, can you watching this post? Sir, zoom in, sir. Okay. We are tied with the Jaslin Endosurgicals Private Limited, and here is the owner of this company, Mr. Umesh Sonar. This is his mobile number. You can directly contact him. Can you seeing this screen, madam? Thank you. Is there any query from the participants? Sir, what are the ingredients of the Bhagandar oil? Yes, madam. As I told you, can you now you can watch this in the Sushruta Samhita, Chikitsa Stan 8 chapter 43 to 46 verse. In that,
Acharya Sushruta said that the people मुलेठी, लोधरक, कूट, इलायची, रेणुका बीज, मजीट, धाप के फूल, सारिवा, हल्दी, दारू हल्दी, प्रिय फूल, प्रियंगू, राल, पद्मा, कमल केशर, सेहुंड, वचा, कलिहारी, मोम और सेंधा नमक, इन द्रव्यों को पूर्ण रूप से एकत्रित करके इनके द्वारा धैर्यशील वैद्य तेल पाक करे। यह तेल गंडमाला मंडल तथा प्रमेहजन्य व्रण के रोपण के लिए हितकर एवं भगंदर नाशन है। उन्होंने टोटल 4 योग दिए हैं आचार्य सुश्रुत जी ने भगंदर नाशन के लिए। एक दूसरा है नेग्रोधादि गण के द्रव्य शोधन रोपण के लिए हितकर तथा इनके सिद्ध तेल या घृत भगंदर नाशक होता है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मैडम ये? It's visible. ये सर दिख रहा है। ओके, टोटल सर 4 योग बताए हैं। ये इनमें से हमने 1 नंबर का जो है मैडम, 1 नंबर का हमने बना के इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके तो उसे पेशेंट का जो क्षार सूत्र से हर हफ्ते जो बदलने के लिए जो तकलीफ होती थी और बदलने के बाद 3 दिन तक उसको कटिंग जब होती थी तो जो तकलीफ होती थी, तो इसके पहले की प्रैक्टिस में ऐसा हमें देखने को मिला है कि वो क्षार सूत्र की तकलीफ से ही पेशेंट बोल देता है बीच में कि सर ये काट दो, हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे मेरे साथ 3-4 पेशेंट ने पूरे 21 ईयर की प्रैक्टिस लाइफ में 3-4 पेशेंट ने वो जो उसको पेन होते थे, वो पेन की वजह से हमने ये कुछ नया तरीका देखा कि भाई इसमें कुछ कर सकते क्या, क्षार सूत्र को ऑप्शन दे सकते हैं क्या। तो हेलो सर फ्लश करते हो ये ये ऑयल से? नहीं मैडम, हम इसको इंटरनल ओपनिंग वाइक्रिल से क्लोज करने के बाद में वर्ती इसकी ये तेल में वर्ती बना के जो स्टरलाइज अपना गॉज होता है वो भर भर के बाहर से ही भरते रहते हैं। तो वो भरते भरते फिर इंटरनली वो फिचुलस ट्रैक्ट हील होता आता है और 10, 15, 20, 25 दिन जितना वो लंबा है, जितना बड़ा है, उसके हिसाब से वक्त लेता है। तो वर्ती फिर डेली चेंज करते हो? यस मैडम, डेली चेंज करना पड़ता है, उसके लिए 5 से 7 मिनट लगते हैं। लेकिन चेंज करने में क्या है, पुराना वाला निकालना है और नया वाला डालना है, तो उसमें पेशेंट को पेन नहीं होता है जो क्षार सूत्र में कटिंग में होता है, क्योंकि वहां पे केमिकल कॉटराइजेशन की वजह से कंटिन्यूअस पेन होता है। पेशेंट ना सो सकता है ना कुछ काम कर सकता है। लेकिन इसमें एक बार आपने ये वर्ती या भगंदर नाशन का पैक अंदर डाल देने से फिर वो कुछ भी काम कर सकता है, उसको पेन नहीं होता है। ओके और सर जो ये इंस्ट्रूमेंट है इससे कोई चांसेस कि फास्ट ट्रैक मतलब बन जाए? नहीं मैडम, इसीलिए तो हमने आपको बताया, वीडियो में बताया है कि इसके साथ में हम गाइड वायर भी प्रोवाइड करते हैं। ये स्पेशली स्टेनलेस स्टील की गाइड वायर है, जो गाइड वायर में ही इसका जो हॉलो पार्ट होता है सामने वाला, तो ये हॉलो पार्ट गाइड वायर में जाता है, तो ये फॉल्स पैसेज को होने नहीं देता है। देखिए अभी आप स्क्रीन पे मुझे देख रहे होंगे, ये अपना फिचुला डिब्राइडर है और ये गाइड वायर है। ये गाइड नहीं सर नहीं दिख रहा है। ये स्लोप दिख रहा है ऑयल का, और पहले भी ना स्प्लिट स्क्रीन था, ठीक से नहीं दिखा। अच्छा, सर ये जो डिवाइस है आपकी, ये हाई एनल फिस्टुला और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में भी yes, definitely we can use high canal fistula also, low canal fistula also. तो उसमें जो मेथड है वो सेम रहेगी, डिब्राइड करेंगे और yes भगंदरनाशक same तेल का जो है वो पिचू रखेंगे। same। अभी आप मुझे देख पा रहे हैं क्या सर? नहीं सर, अभी आपका श्लोक दिख रहा है, आप तो नहीं दिख रहे। अच्छा, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अभी दिख रहा हूँ सर? हाँ, अब आप दिखाई दे रहे हैं सर। ओके,
तो ये जो गाइड वायर है स्पेशली मेड गाइड वायर है और ये अपना फिस्टुला डिवाइडर डिवाइस है। तो इसके जो ये ट्यूब है सामने वाली, ये ट्यूब में ये गाइड वायर डायरेक्ट आप जब अंदर फिस्टुलस ट्रैक्ट में गाइड वायर डाल देते तो इसमें डायरेक्ट डाल देते हैं, तो ये गाइड वायर उसको इधर उधर जाने नहीं देती, तो फिस्टुलर फॉल्स पैसेज नहीं बनता है एनोरेक्टल में, एनोरेक्टल रीजन में। सर आप कोई केस का वीडियो बता सकते हो? हाँ अभी तो मैंने बताया था मैडम वीडियो आपको, मैं फिर से आपको ये मैं दिखा नहीं सर। अच्छा नहीं दिखा दिखा नहीं, ठीक है ठीक है, मैं फिर से आपको शेयर सर करता जो हूँ। कर्वीलिनियर ट्रैक्स होते हैं, जो कर्वीलिनियर ट्रैक होते हैं सर, वो उसमें भी ये मतलब यस आपका ये जो यस सर, है सर वो आराम से जाएगा। यस डेफिनेटली सर। जो कर होते हैं ना वहां पे भी ये जो गाइड वायर है ये तो फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो अपना फिस्टुला डिवाइडर डिवाइस है ये रिजिड है, लेकिन आप इसको कहीं पे भी मोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा ही फिस्टुलर ट्रैक रेडियली होते हैं ऐसा नहीं है, वो कर्व ही होते हैं ज्यादातर। तो कई बार हम सर जैसे रैमिफिकेशन भी होता है, मतलब ब्रांचिंग भी हो जाती है, जो ऊपर लेवेटर एनआई की हाँ सो तरफ चली जाती है ब्रांचेस करेक्ट, उसमें। यस सर गुड क्वेश्चन। जहां पे ब्रांचिंग होती है सर, तो अकॉर्डिंग टू द एमआरआई रिपोर्ट आपको वो सामने रखकर उसके हिसाब से आपको आप डिब्राइड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे गाइड वायर नहीं यूज कर सकते। आप वहां पे आपके हिसाब से एक आइडिया बना के आप एट द ऑपरेटिव साइट आप उसको वहां के वहां डिब्राइड कर सकते हैं, या फिर जो छोटी मोटी ब्रांच होगी उसे आप स्कूप से भी कर सकते हैं सर। ओके सर। उसमें उसमें गाइड वायर यूज नहीं कर सकते ब्रांच में, और ना ही फिस्टुलर डिवाइडर डिवाइस कर सकते, आपको स्कूप से ही करना है। ओके सर। हेलो हाँ यस। सर, जो इंटरनल ओपनिंग को वाइकल से आप क्लोज करते हैं वो ट्रांस एनल करते हैं। सॉरी। इंटरनल ओपनिंग का जो क्लोजर आपने बताया हाँ वाइकल से, हाँ वो ट्रांस, ट्रांस एनल जाके करते हैं, वो इस यस यस डिवाइस से नहीं डेफिनेटली करते हैं। डेफिनेटली सर, ट्रांस एनल ही करना पड़ता है, ट्रांस एनल ही अपने अंडर विजन अपन कर सकते हैं और कंप्लीट ब्लॉक कर सकते हैं उसको लेयर बाय लेयर, अंडर मतलब इस विजन ही करना डिवाइस में पड़ता है। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वो बाहर से किया जा सके, वो तो हमको ट्रांस एनल करना पड़ेगा, है ना सर? यस यस डेफिनेटली सर, थ्रू द फिस्टुलर स्टैक देयर इज नो चांस। ओके। अगर आपको वीडियो नहीं दिख रहा है मैडम, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है वहां पे ये जो वीडियो मैंने अभी बताया था वो वीडियो आपको वहां ओके पे भी मिल सकता है मैडम। ओके ओके, थैंक यू। चैनल किस नाम से है सर आपका? डॉक्टर महेश चौधरी। ओके सर। हाँ वहां पे मेरा फोटो आ जाएगा, उस चैनल पे आप जाके ये फिस्टुला ऑपरेटेड बाय फिस्टुला डिब्राइडर डिवाइस नाम का वीडियो है, वहां पे आपको सामने ही फ्लैश फ्लैश हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं। हाँ इज इट ओके? एनी क्वेरी फ्रॉम द स्टूडियस पार्टिसिपेंट्स? सर एक चीज और है। यस। कई बार ऐसे फिस्टुला होते हैं सर कि जो जिसका इंटरनल ओपनिंग तो हमें बहुत क्लियर होता है, लेकिन उसकी एक ब्रांच जो है ऊपर लेवेटर एनआई की तरफ जाती है, हाँ और वो काफी डीप होती है सर। और अक्सर जो है क्षार सूत्र करते हैं तो वो जो ऊपर जाने वाली ब्रांच है वो छूट जाती है, छूट जिसमें कि जाए, यस यस डेब्रीज और डेफिनेटली स्लग सर। पड़ा रहता है, उसको और उसके कारण से रिकरेंस होता है। तो सर आपकी डिवाइस कैसे मदद करेगी इसमें? सर तो इसमें ऐसा है कि डिवाइस डेफिनेटली आवर डिवाइस विल हेल्प देयर। देखिए आपको ये एमआरआई क्योंकि करने वो के तो बाद, ब्लाइंड है ना सर, वो ऊपर की तरफ ब्लाइंड है, वो जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो उसकी ब्रांच। हाँ 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 मैं बताता हूँ आपको सर, जो सर ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आपके पास एमआरआई की रिपोर्ट है, एमआरआई की फिल्म है, तो जी। अकॉर्डिंग टू दैट आप उसका जो ब्लाइंड एंड है उसमें गाइड वायर डाल के या फिर प्रोब डाल के
उसको जी आप इंटरनल ओपनिंग बना सकते हैं सर। और जब तक इंटरनल ओपनिंग बनाएंगे नहीं तब तक वो आप इसको ना क्षारसूत्र डाल सकते हैं ना भगंदर तेल डाल सकते हैं। क्योंकि आप भले ही ऑपरेट करते समय वहां पे तो पेशेंट एनेस्थेटाइज रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरे दिन डालने जाएंगे तो वहां पे आप भगंदर नाशन तेल या फिर वो डाल नहीं सकते, वहां पे आपको क्षारसूत्र ही डालना पड़ेगा फिर सर, जो ऊपर गया है उसके लिए। ओके सर। हम्म। ये भगंदरनाशक तेल को सर आप ऑटोक्लेव करते हैं या डायरेक्ट ऐसे यूज करना है? नहीं सर, डायरेक्ट, क्योंकि वो तेल होता है, तेल हैज अ नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी हैज, तो उसको कोई स्टराइल करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। आप सीधा बना के स्टराइल बॉटल में उसको स्टोर करके रख दो और डेली यूज करो। तो सर ओके सर। कॉटन का वर्ती बना के इंसर्ट करते हो क्या? सॉरी मैम। कॉटन का वर्ती बना के इंसर्ट हाँ, करते गौद, हो? जो स्टराइल गौद होते हैं अपने कॉटन के, हम्म। उनको ही डायरेक्ट तेल में डुबा के सीधी की सीधी अंदर पुश कर देते हैं। अच्छा। हम्म। थैंक यू सर। सर क्या ये भगंदरनाशक तेल भी आप जो है वो नहीं प्रोवाइड कराते हैं, मतलब उसको बेचते नहीं हैं? नहीं नहीं सर, वो आपको ही बनाना पड़ेगा। ये कोई मार्केट अच्छा में अच्छा। कोई कंपनी नहीं बनाती है, ये आपको ही खुद को बनाना पड़ेगा। जी। चाहे तो आप जो आचार्य सुश्रुत जी ने जो चारों योग बताए हैं, चारों को चारों योग को आप एक करके ही एक भी वो भी बना सकते हैं आप। राइट सर। हम्म। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है सर कि आपको पहले योग में जो 20 द्रव्य दिए है, 20 में से आपको 10 भी फ्रेश मिलना मुश्किल है। तो इसलिए आपको सही जितने बराबर। जितने मिलेंगे उतने बना के आप कर सकते हैं। ये भी हमने सर बहुत हिम्मत करके ये प्रयोग किया है, क्योंकि इस पे आज तक काम नहीं हुआ, भगंदर नाशन तेल पे आज तक क्षार सूत्र पे ही हमने काम किया है। तो सर इसमें लेकिन एक है सर, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। क्षार सूत्र से टोटली पेशेंट विड्रॉ हो गए हैं, मतलब क्षार सूत्र के पेन से बिल्कुल तो वो टोटली फ्री हो गए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका यस। सेशन बहुत अच्छा था। और इस तरह का नया इन्वेंशन देख करके बहुत सर खुशी हुई सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। सर पर हम लोग क्षार सूत्र में जो ट्रैक्शन देते हैं वो यहाँ नहीं रहेगा ना नहीं, कटिंग के लिए? डेफिनेटली मैडम, यहाँ पे अपने को ट्रैक देखिए, उसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या है कि आप फिचुलस ट्रैक को स्कूप से डिब्राइड करने के बाद में वहां पे आप क्षारसूत्र टाई कर देते हैं, नॉट सो हम्म टाइट नॉट सो लूज। तो वहां से क्या होता है कि जो फिचुलस ट्रैक और एनल कैनल का ऑरिफाइस, ये इसमें हम्म जो आपका पार्ट होता है बॉडी का, मसल्स, फैट वगैरह वगैरह, तो उसको तो आप अननेसेसरी कट कर रहे हो। हम्म। बराबर है, क्योंकि फिचुला बराबर। ट्रैक्ट बटक से लेके एनोरेक्टल तक है, तो उसके बीच वाला जो पार्ट है एनल ऑरिफाइस तक, उसने तो कुछ गुना नहीं किया है ना, आप उसको कट करके हील कर रहे हैं। शाह हम्म। सूत्र का काम वो है। लेकिन अगर आप अंदर के अंदर उसको डिब्राइड करेंगे और उसी को भरेंगे ग्रेनुलेशन करके, तो क्षार सूत्र की तो जरूरत ही नहीं है ना, और ना ही उसको पेन होगा। 15 20 25 दिन में पेशेंट डेली ड्रेसिंग के लिए आएगा आपके पास, 5 5 मिनट के लिए ड्रेसिंग करके ही वो अपना रूटीन काम भी कर सकता है और उसका फिस्टुला भी हील हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है मैडम कि क्षार सूत्र इज नोटोरियस फॉर इट्स पेन। जो हाँ। उसको बदलने के बाद 3 4 दिन तक जो पेन होता है ना, वो इतना अनबियरेबल होता है कि 4 से 5 पेशेंट ने तो वो बीच में ही कटवाने के लिए बोल दिया। वो बोला हमको आपका ना श्वास सूत्र चाहिए ना आपकी ट्रीटमेंट चाहिए सर, ये निकाल दो, बोले हम सहन नहीं कर सकते, हम भले ही उस फिचुला के साथ जी लेंगे। हम्म लेकिन तो फिर बाद में फिर मन में फिर सोचा कि भाई इसको कुछ ना कुछ ऑप्शन देना चाहिए। फिर करते 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 ये डिवाइस बन गया, और डिवाइस के साथ में हमने ये तेल भी यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन एक्चुअली जो वीडियो मैंने आपको बताया वो आपको दिखा नहीं, और आप जो यूट्यूब पे देखेंगे मैडम, उसमें हमने एक क्षार सूत्र इसलिए डाला है कि क्योंकि ये अपने सीनियर वैद्य द्वारा सेट प्रैक्टिस है। तो इसमें हम अभी तक हमारा स्टडी चल रहा है, 30 से 31 पेशेंट हमने किए हैं भगंदर नाशन पे। हमारा डाटा जैसे ही इकट्ठा होगा तो हम इसको भी पब्लिश करने वाले हैं। लेकिन जो सेट आज की तारीख में सेट है, वही सेट प्रैक्टिस है, वही हमको दिखाना पड़ेगा, इसलिए वीडियो में हमने छात्र सूत्र ही डाला है। ओके।
Thank you, sir. Yes, thank you, ma'am. Sir, are you planning for any hands-on training? Yes, ma'am, definitely. If anyone is interested, then we are already using this Fistula Debrider device in our hospital, working hospital, and there is nothing to learn. Just like you curious surgeons, it is very easy. If you watch my video, then you can directly you can perform the surgery by this device, ma'am. Dr. Mahesh sir is always cooperative for our surgeons. If anyone want hands-on, he can directly contact him and go to his hospital. Yes, As he's a professor in one Bhusawad, Sakegaon College, I think. Sir, right now, आप वहीं पे है अभी yes, definitely. In the Busal Chaitanya Ayurved College. चैतन्य आयुर्वेद कॉलेज साकेगांव. तो Yes. साकेगांव का कॉलेज का एक बड़ा हॉस्पिटल भी है भुसावड़ में. तो आप सर से कांटेक्ट करके वहां जा भी सकते हैं. सर इज वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन. और आप सभी के इंटरेक्शन से ये ऐसा प्रतीत होता है कि आज जो हमारा मोटो था वेबिनार्स का कि शल्य फेलोज को एक साथ में लाकर इंटरेक्शन बढ़ाया जाए और अलग अलग तरीके के अच्छे टैलेंटेड जो लोग हैं जो आज प्रोफेसर ग्रेड से ऊपर आए हुए हैं या नए बच्चे भी जो है जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्लेटफॉर्म देने का वो आज सक्सेसफुल हुआ ऐसा मैं फील कर रहा हूँ. आप सभी इससे एग्री होंगे जरूर. और हम लोग आगे भी नीमा सर्जिकल सोसाइटी के मार्फत वर्कशॉप्स हैंड्स ऑन वर्कशॉप जिसमें ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज है उसका अरेंजमेंट करने के प्रोसेस में है. नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली हम लोग अच्छे वर्कशॉप्स के साथ आपके सामने आएंगे. अभी हम लोग उसके चैप्टर्स नीमा सर्जिकल के चैप्टर्स फॉर्म कर रहे हैं, लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और वेबिनार्स के थ्रू सामने आ रहे हैं. और लेकिन हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट ईयर से वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस के साथ भी आप सभी से मिलेंगे. आप सब मैं आज के चेयरमैन डॉक्टर विजय सर से विनती करूंगा कि आज सर से आपके कंक्लूडिंग वर्ड रखें प्लीज. विजय सर. Yes, sir. Dr. Mahesh, sir, it is a nice presentation. So, thank you all the doctors. Actually, we are conducting all the webinars, surgical webinars from NIMA Surgical Society. And so we are also starting all the chapters of respective states. So, and most of the surgeons are enrolling and joining in our NIMA Surgical Society. Please take up the membership and be the part of NIMA Surgical Society. Shortly, we are going to start even our surgical workshops and even CMEs also. So please do join from your respective states and please contact Dr. Sandeep Mesham sir. He will guide you in a better way. And who are interested to participate and give lectures also or on different topics and your experience, share your experience in your typical cases. You can present the cases also through NIMA platform. And thank you, my sir. It was a nice presentation. And I will watch your YouTube channel also, video also. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. अभी सभी पार्टिसिपेंट से मैं एक और रिक्वेस्ट और इनिशिएशन के लिए बोलूंगा कि आपके पास अगर कोई आपकी इनोवेशंस है जो आपको सभी के सामने रखना चाहिए ऐसा अगर प्रतीत होता है तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए. डॉक्टर विजय सर से कांटेक्ट कीजिए. आप महेश सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. आप डॉक्टर डागा सर को भी बोल सकते हैं. मैं स्पेशल थैंक दूंगा आज के लिए डॉक्टर डागा सर को भी कि उन्होंने काफी वो हमेशा ही हमारी मदद में. वेबिनार्स अरेंज करना काफी सिंपल काम नहीं है. लिंक्स अरेंज करना उसको व्यवस्थित तरीके से रन करने के लिए प्लेटफॉर्म अरेंज करके देना ये भी काफी बड़ी बात होती है विदाउट इंटरप्शन करने के लिए. तो मैं उनका भी थैंक करता हूँ नीमा सर्जिकल सोसाइटी के बिहाफ पर. और आप सभी से हम लोग आज के वेबिनार में विदा लेते हैं. थैंक यू महेश सर. Thank you, Mesham sir. Thank you, NIMA Surgical Society. Thank you, all of you.